Attention all student of 5th semester electrical diploma for the subject professional development 5. For professional development 5, it is related with the 5th semester, that is why it is name given professional development 5. The learning content of this syllabus is that need and importance of group discussion in professional work, ideal group discussion, skills needed to effectively participate in group discussion, and practice of group discussion skills. So theoretically, of course, I can read out all these content of the learning, but practically when the student available in the classroom, when offline classes will start, then we can practically take all these tasks given in this. So here description of teaching learning process is given, that teacher will teach student how group discussion is organized through examples and cases. Teachers will form a small student group, assign them topics for group discussion, lead the group discussion, guide them to participate in group discussion. Teacher will also supervise, correct and improve their participation. Teacher will ensure their learning without organizing group discussion on various topics. So these are the teaching learning process of this particular topic. So basically group discussion, it is started with a group of 5 students. Normally previously I have carried out this particular activities in professional activities subject in the 6th semester, in which I prepared a group of 5 students in the classroom, and according to strength of the classroom there were about 60 students was there. So 12 groups I have formed with 5 students each, and in this particular group I instruct the students that you select your group leader. So every student have selected one group leader in each group, and then I have given topic related to the different areas which are described in this also. So topic given for the discussion is depending upon the choice of the student or their interest of the student. So here the fields given for discussion of the topic are different types. Social topics are there, topics related to environment, topic related to technology, topic related to the process or the system adopted in the industries for production process, then topic related to technology, then topic related to education policy, then topic related to the placement situation in the country. So there are so many topics on which the discussion can be made. So here in this particular content, the group discussion, the current affairs, social issues, real life multi-aspect engineering and technology, then technology related problem and professional cases, etc. So these are the recommended topics in this particular syllabus are given. So you have to prepare individually on this subject whatever type of matter you can obtain, either from Google or from the WhatsApp group
of your student group WhatsApp group or by your own discussion on the mobile phone. You can discuss with the persons who are experienced in this field, and you can get the number of information for this particular type of topic which is given in this syllabus. So prior communication of topic to student, the topic of group discussion should be communicated to student well in advance so that they could prepare the themes or themselves for the discussion through gaining knowledge about the topic. Now this is what I have told just now, that when I have given a topic to you, you try to gather the information or collect the information on that topic and try to discuss in a small group of 2-3 students. And when we form the group in the practical, when the student will attend the college in the offline classes, then we will form the group of 5, and whatever topic I have given on which you have prepared the preparation is you have carried out, then we have the group discussion. So group discussion means people's interact to each other. Group discussion doesn't mean कि जो leader of the group है that will communicate only all the things. It is not like that. It is a group discussion means we are sitting together and group discussion leader, the leader of the group will give you the topic, and on that topic you have to discuss the points. So points of discussion in which merits and demerits both will come. Means whatever topic we have taken, in which we have to discuss on the merits of the topic and demerits of the topic. Then we have to draw some conclusion regarding that discussion. This conclusion should be written on the paper, that by discussion of this particular topic we have discussed the points related to merits and demerits of this topic, and according to that we have concluded that this is the final result or final outcome of this particular topic. So duration of group discussion, it is given normally 20 to 30 minutes. You have, when you actually go for group discussion, then 20 to 30 minutes will be given you for carried out the conclusion. So discussion is not the shouting or the fighting between the group. It is only an intellectual or the mental exercise in which you have to think about whatever the subject given to you. On that you have to find out the solutions. So in this one more point is given, that skill required for effective participation in group discussion. Now what type of skill you require? So individual students should note down these skills which is required and try to develop in themselves these skills. So first skill is skill of communication. Communication skill means how to present your view in terms of language. So normally group discussion takes place in English language, because English is a business language, and whenever you go in field and even for your interviews in different type of campus interview conducted in the institute by the multinational companies, then they allow the student who discuss the matter in English. Means group discussion normally carried out in English language. So communication skill should be developed by the student, and for that they have to do extra exercise, or they have to go for a extra devotion of learning for English language. Every day they should give at least 1 hour, 2 hours for learning the English language, so that they can well in the writing of English and speaking of English and understanding the English language, because this will make your career in future. So it is given that skill required for effective participation, that
First point is communication skill. Then behavior skill and etiquettes. Etiquettes means whenever you sit in the group, so many time I have seen in the final year student when I have taught the subject of professional activities in which group discussion I have given the topic. So students are not very serious to discuss on the topic. They discuss some other matter, or they are not behaving properly, they are not sitting properly. So etiquette should be there for group discussion. Means you have to sit on table face to face. If 5 students are there, then 3 on one side, 2 on one side, so they become face to face for the discussion. They carried with them some paper on which they can write the points on which they are discussing, and they are keeping their views. So behavioral skill means you have to behave properly in the particular group discussion. Don't angry on point on which you are not agree. Sometimes what happen, if person is not agree, then they become angry on other person or other student, and at that time the total environment is disturbed of discussion, and shouting is started. Means people are not understanding each other, and they are try to keep their own opinion or own thoughts on the other student. So this is not the ethics or the etiquette for the group discussion. You have to listen every student who is speaking, and whatever type of objection you raise, that again solved by the discussion. So behavioral skills and the etiquettes, these are the part of the part you have to play during your discussion period. Then third point is listening and arguing skill. Listening skill is that you have to keep mum and hear whatever one person is telling. When he complete his whole dialogues, after that you can raise the argument on that particular point which the person has discussed. So if you have any argument that is having a proper base, then you have to argue for that point. Otherwise unnecessary argument will also increase the dispute between the group. So this is the point you should listen. At the third point, that listening properly and arguing skill should be there. Listening skill and argument skill. So these two skills should be there, so that student will learn more from the group discussion. Then students analysis skill. Now whenever you come to the conclusion of the topic, then you have to analyze whatever discussion you have taken on the subject. What are the points which are to be finally concluded to communicate to the authority, or the result which we want to show. Because when you give a topic on discussion for the group discussion, so ultimately the teacher either teacher will ask you that what is your final outcome of this discussion. So you should have the capability or skill of analysis of the whole discussion and finally put the answer to the teacher. Or in case of group discussion, when you go for the industry interview, then the managers or HR peoples of the industry, they give you some topic and want a conclusion within 20 to 30 minute discussion. Then you discuss the topic and finally you analyze what is the answer, final outcome is there, and that you inform to the HR peoples of the industry. So if they are satisfied with your discussion and satisfied with your results which you have obtained after discussion, then definitely your selection for the job in that company will be confirmed. Because in process of employment in the industry, first they conduct a written test, they then go for a group discussion, then go for the interview. So the marks given in the theory paper of the written test, then mark given in the group discussion, they are added in the final marks given for the interview. So interview may be of two types.
One is from the institute level interview, and second one is the interview taken on the industry level, that in the office of the industry. So these two interview conducted, and in all the four activities, written test, group discussion and two interviews, whatever the final list is prepared according to marking done on these four activities. So you have to be very particular about this subject of group discussion in the professional development 5, that whenever you join the institute after this period of lockdown or not coming to the college, then when offline classes will be run, I will give the subject you, and on that subject you prepare the information from different sources, and then have a healthy discussion in the group and find out the last result for that. Then student analysis skill, after that the last point is there, students appropriate attitude. This appropriate attitude is coming under etiquettes again, the second point which I have given, behavioral aspect of the student, that will come under the attitude. So some student are having attitude not to listen, वही बोलेंगे, सुनेंगे नहीं. So ये गलत attitude है. Attitude should be like this, that whatever one person is giving, first that group leader will definitely give you some rules for discussion, and according to those rules for discussion you have to bound to discuss within those periphery or those limitations which is given by the group leader. Of course limitation is not that you can go out of the subject. Out of the subject, if you want to go, then give the proper reason for that. Or for explaining some example or explaining some points, you can take the example of the things which is not related with the subject even. But if you can explain with that example and convince the group member, then it will be allowed. But you don't put unnecessary discussion. Unnecessary discussion means which is not giving any output to you, but you are discussing only useless things. So for this, the attitude you should have, and in this attitude you should always think positive. And when you have an attitude of positive thinking, then definitely you will get the certain results which are obtained in the favor of the group. And whatever requirement is there according to that topic, the final results you will get, it is better as compared to negative approach for the subject discussion. So have a subject and have the positive attitude for the subject, and then you discuss this. In your school level you have also face this वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दो होते थे. तो in that type of discussion, here in group discussion we are not go for वाद विवाद. मतलब हम उसको ऐसा नहीं डिस्कस करेंगे कि एक उसके पक्ष में बोल रहा है, दूसरा उसके अपोजिट बोल रहा है, तो इट विल नॉट बी अलाउड. अपोजिट में बोलना है तो रीजनिंग और आर्गुमेंट के साथ आपको अगर डिस्कस करना है तो डिस्कस करना है. ऐसा नहीं कि दो स्टूडेंट एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तीन स्टूडेंट एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो पता चला एट द लास्ट यू आर नॉट कंक्लूडेड द सब्जेक्ट. सो you all 5 person in one group, they have to agree with each other on the points, and those point which are not agreeable, मतलब जिस पे आप एग्री नहीं कर सकते, तो उस पे आप you give the proper argument for the to the group, and group if agree with that argument, then you finalize that point. So discussion should be always started with the points. Points mean the first point, say for example current affairs. So current affairs, you have to decide what are the current affairs. You write down some points of the current affairs. तो current affairs अभी जैसे अपन डिस्कस करें current affairs पे, तो अभी मेजर 2 प्रॉब्लम चल रहे हैं अपने देश में.
या अपने सराउंडिंग में। एक तो तालिबान की प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और दूसरा अपने यहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा। तो ये दो करंट अफेयर्स हैं जिस पे कि आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो बोथ में आपको वही है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगी कि व्हाट आर द रीजन फॉर दैट तालिबान हैपनिंग इन द अफगानिस्तान, and why these peoples are opposing 3 agriculture bill which is given by central government for the farmers। तो ये दो करंट अफेयर दो मेजर हेडिंग में है। अदरवाइज देर आर सो मेनी करंट अफेयर्स यू कैन फाइंड आउट इन सराउंडिंग टू यू। You can discuss on all the one current affair also. You can select as the present education policy which is launched by the central government, and for that you go for discussion for the this new education policy implemented to be implemented in this country. So first you have to collect the information regarding that, what is this policy, what are the salient points of this, and what are the shortcoming in those points, and what is the things which cannot be applicable and which things which are applicable. So these type of points you prepare for this. So I have given 3 topics on current affairs. If you are having free time at your home, then you collect the information on the 3 topics. Maybe probably when we meet in the college, then I may give this type of topics to you for current affairs for discussion, and give the answer or the conclusion of your discussion to the teacher. Okay, so we will find that how good solution you obtain after the discussion. Then do's मतलब we have to discussion etiquettes में some points we have to consider. डिस्कशन एटीट्यूड में स्पीक प्लीजेंटली एंड पोलाइटली टू द ग्रुप, ये मैंने बताया। ऐसे एटीट्यूड विल डिसाइड दिस। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्पीक प्लीजेंटली एंड he has given this politely, one शब्द, one word he has given, politely you have to speak and pleasantly you speak. सो प्लीजेंटली स्पीक का मतलब क्या होता है कि पर्सन्स लिसन इट प्रॉपरली। पोलाइटली में क्या होता है, आपकी लैंग्वेज का इफेक्ट आना चाहिए उसमें। पोलाइटली में मतलब आपको अदर पर्सन डज नॉट फील कि ये मेरे ऊपर डिक्टेट कर रहा है। अगर ऐसा फीलिंग उसको आएगा कि ये डिक्टेट कर रहा है या अपनी बात ज़बरदस्ती मनवा रहा है, तो वो पोलाइटली नहीं होगा। तो पोलाइटली शब्द इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे कि आप अपनी बात को बहुत सिंपैथेटिकल तरीके से रखिए, मतलब सो दैट पर्सन्स डू नॉट इरिटेट। अल्टीमेटली द मीनिंग ऑफ दिस पोलाइटली एंड प्लीजेंटली का बेसिक मतलब ये है कि अदर पर्सन विल नॉट इरिटेट बाय योर लैंग्वेज और योर स्पीच। देन रिस्पेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी मेंबर। नॉर्मली समटाइम व्हाट हैपन, पीपल्स आर हैविंग दिस टाइप ऑफ हैबिट कि वो अपनी अपनी बातें ही बोलते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यू शुड गिव द चांस टू स्पीक टू अदर्स एंड लर्न एंड गिव द रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी मेंबर। सभी मेंबर्स के डिस्कशन को आपको कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। भले ही वो सब्जेक्ट पे मान लो थोड़ा रॉन्ग भी बोल रहा होगा तो भी आप उसको कंसिडर करेंगे, एंड आफ्टर आर्ग्यूमेंट यू रेक्टिफाई इट। ओके, दिस इज द मोटो बिहाइंड दिस पॉइंट। देन लर्न एंड डिसएग्री पोलाइटली। अगर आपको किसी चीज़ को डिसएग्री भी करना है तो पोलाइटली डिसएग्री करिए आप उसको। उसके लिए आप शाउटिंग नहीं करें, झगड़े नहीं या ज़बरदस्ती अपना ओपिनियन थोपे नहीं, ये आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। देन ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। एज आई जस्ट नाउ टोल्ड यू कि कई बार अपन टॉपिक से भटक जाते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपको दिया है यू शुड बी स्ट्रिक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। यू डोंट डिस्टर्ब फ्रॉम द टॉपिक हेडिंग और द टॉपिक टाइटल। टॉपिक टाइटल से आपको
डिस्टर्ब नहीं होना, यू हैव टू डिस्कस विद इन द लिमिट ऑफ द टॉपिक टाइटल. सो दिस इज दैट व्हाट द स्टिक टू टॉपिक एंड डिस्कशन. देन एग्री with and the acknowledge what you find interesting in the group discussion. तो नेचुरली जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके लिए आपको सभी को एग्री करना ग्रुप में, सो दैट यू विल फाइंड ए फाइनल कंक्लूजन दैट दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द होल डिस्कशन. अब डूज एंड डोंट्स में क्या है, तो डूज में मैंने ये 5 पॉइंट आपको बताया. अब डोंट में क्या आएगा कि जो आपको डिस्कशन के ड्यूरिंग नहीं करना है. नहीं करना है मतलब वो जो एबनॉर्मल कंडीशन आपको सिचुएशन क्रिएट कर दे, ऐसे काम नहीं करना. तो उसमें क्या है कि लूज़ योर टेम्पर, दिस इज़ डोंट में आएगा. मतलब आपको अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है किसी भी हालत में. डिस्कशन से आप एग्री हो या नहीं हो किसी के व्यू से, लेकिन आप टेम्पर लूज़ करके उस डिस्कशन को डिस्टर्ब ना करें. ओके, यू लिसन इट. तुम्हारा उसके व्यू से मान लो व्यू अलग है, तो जब आपका चांस आएगा बोलने का तो यू विल स्पीक ऑन दैट पॉइंट. ओके, बट यू डोंट लूज योर टेम्पर ड्यूरिंग द डिस्कशन. दिस इज द डोंट्स टू डोंट डू. देन सेकंड पॉइंट ही इज गिवन शाउटिंग. जैसे शाउटिंग मैंने बोला आपको, यूज़ मॉडरेट टोन एंड मीडियम पिच. शाउटिंग का मतलब चिल्लाना, चिल्लाना नहीं है. आपको मीडियम पिच रखना अपनी आवाज़ का और पोलाइटली आपको बोलना है. ठीक है, तो ये डोंट्स में आएगा. देन शाउटिंग इज़ नॉट शुड बी देयर. ये मैंने पहले भी आपको बोला है. शाउटिंग मतलब चिल्ला चोट, एक दूसरे पे गुस्सा तान लिया कि नहीं तू गलत बोल रहा और ये गलत है, तो ऐसा नहीं है. आपको शाउटिंग बिल्कुल नहीं करना है. आपको स्पीच की लाउडनेस को भी ऐसा रखना है कि मान लो दूसरा ग्रुप आपके थोड़े पास में ही बैठा है, तो ऐसा नहीं हो कि आपका डिस्कशन का मैटर उन तक जा रही है आवाज़, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है. सो दिस इज़ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर शुड आल्सो बी कीप इन द माइंड दैट यू डिस्कस द थिंग्स पोलाइटली and with low pitch sound so that everybody can understand the things, and louding or the crowding of the situation is not created. Then third one is the use too many gestures when you speak. Gestures like finger pointing and table thumping, these are the things. जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी, ये फॉर एग्जांपल मेरी जो बॉडी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज एक डिस्कशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. लेकिन आपको उस बॉडी लैंग्वेज को इतने एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना है कि आप टेबल ठोकने लगें या थम्पिंग करने लगें, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगी पूरे डिस्कशन को. तो बॉडी लैंग्वेज इज़ नेसेसरी, ऑफ कोर्स मैनी थिंग्स इज़ कम्युनिकेटेड फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, बट बॉडी लैंग्वेज शुड बी इन लिमिट, है ना. इसमें जैसे डोंट डूज में बोल रहा है वो कि आपको ऐसा नहीं कि टेबल ठोकने लगे या किसी को धप्पा मारने लगे बात बात में, तो ये सब चीज़ें ग्रुप डिस्कशन में नहीं चलेगी. ये आपकी इनडिसिप्लिन में काउंट होगा. और वैल्यूएशन करने वाली अथॉरिटी नॉर्मली क्या होता है, जब ग्रुप डिस्कशन होता है इंडस्ट्रीज में किसी ग्रुप में, तो वो एक हिडन कैमरा लगा रहता है उस हॉल में. वो आपकी सारी एक्टिविटी वो हिडन कैमरे में नोट होती है, मतलब रिकॉर्ड होती है. तो ये चीज़ जो बिहेवियर बोल रहा हूँ मैं आपको डूज एंड डोंट डूज में, तो ये चीज़ पे यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. और आपको जब ये सब चीज़ें समझ में आएगी तो आपका परफॉर्मेंस विल बी गुड. सो दिस पॉइंट्स आर देयर. देन ग्रुप डिस्कशन रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स. अब देयर आर सम रूल्स आर देयर, सो दे गिवन द रूल्स. दैट फर्स्ट इज़ कम प्रिपेयर्ड. टॉपिक दिया है, उसकी जानकारी, उसकी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटल प्रूफ है वो सब की तैयारी करके आपको पार्टिसिपेट करना है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मेंटेन ए फर्म पोस्चर. मतलब पोस्चर मतलब आपको जब बैठेंगे आप टेबल पे या कुर्सी पे, टेबल के सामने बेंच पे या कुर्सी पे, तो उस समय आपको एक प्रॉपर पोस्चर में बैठना है. ऐसा नहीं कि पैर टेबल के ऊपर या बेंच के ऊपर पैर फैला के बैठ गए, या मतलब इथिक के हिसाब से जैसा बैठना चाहिए वैसा आप नहीं बैठे. तो ये एक प्रॉपर पोस्चर आपको लेना पड़ेगा डिस्कशन के टाइम.
Then third one is the maintain a firm posture. After that, actively participate in the discussion. Many times what happens, सब स्टूडेंट जैसे 5 का ग्रुप है तो वो 5 डिस्कशन 4 कर रहे हैं और एक चुपचाप ही बैठा है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका निगेटिव पॉइंट में गिना जाएगा. वो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप में और बोल नहीं रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, डिस्कशन में भाग ही नहीं ले रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो ये उसका निगेटिव पॉइंट रहेगा. एंड डेफिनेटली निगेटिव पॉइंट्स विल बी कट द मार्क्स. ओके, सो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड इन द ग्रुप. देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट रिटेन योर स्टैंडिंग एंड बैलेंस. तो एक तो अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आपको एक्साइट नहीं होना है किसी भी पॉइंट पे. यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर माइंड सो दैट डिस्कशन विल बी हेल्दी. तो हेल्दी डिस्कशन कब होगा, जब आप शांति से सुनेंगे. यू शुड बी काम एंड योर माइंड इज स्टेबल एंड देन यू विल रिटेन दिस पर्टिकुलर स्टैंडिंग एट द बैलेंस लेवल. सो यू विल answer better, you will discuss better, you can explain better when you are maintain your balance of your mind. So this is the point. Then do not get emotional. कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट बिकम इमोशनल. सो इमोशनल जब when this emotion will come in the discussion, then total balance of the total discussion will disturb. And in emotional topics some people will start weeping, आंसू टपकने लगते हैं. तो ये इस तरह के सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आप इमोशनल ना हो डिस्कशन के टाइम. अगर आप इमोशनल हो गए तो काफ़ी आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अपने मेन टॉपिक से. सो यू डोंट गो बिकम इमोशनल व्हेन एवर यू हैव अ डिस्कशन in the group. So these are what the points related to this first topic of the professional development activities for the 5th semester, and whatever content he has given, I have briefed all these points which is he has given for this. So ultimately now what I want to say, that whenever you join the institute, we will conduct this type of group discussion, and in which they have given the marking as per like this. The external imitativeness demonstrated 2 मार्क का है. एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एक्शन और रिएक्शन भी 2 मार्क का है. इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ग्रुप सेटिंग्स, ये भी 2 मार्क्स का है. और इसके बाद एक्सटेंट ऑफ परसुएशन डिमॉन्स्ट्रेटेड, इट इज़ आल्सो 2 मार्क्स. और एक्सटेंट ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, मतलब रिज़ल्ट फाइनली अच्छा आए, इसके लिए आपको 2 मार्क्स. तो टोटल ये 10 मार्क्स का डिस्कशन रहेगा, जिसमें 2-2 मार्क्स अलग अलग हेडिंग के लिए आपको दिए जाएंगे. तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से आपको ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेना है. सो यू शुड लिसन माय दिस लेक्चर प्रॉपरली, कामली, बैठ के समझ के, और चाहें तो आप अपनी नोटबुक में ये पॉइंट्स नोट भी कर लें कि अपने को कैसे डिस्कशन करना है और क्या क्या अपनी एक्टिविटी और बिहेवियर रहेगा, उस हिसाब से आपका मार्किंग होगा. So this is not beneficial only for the classroom, but it is also favorable to you whenever you go for a group discussion in the campus interview in the college, or for any other place when you go for interview. And nowadays all the industry, they are including this group discussion to learn the student ability of speaking or communication skill. So ये एक बहुत important topic है पीडी के हिसाब से, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है फुल्ली स्ट्रेंथ के साथ, सो दैट दिस विल आल्सो गिव रिजल्ट आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा. व्हेन यू गो फॉर द जॉब, देन यू डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.